we are going to discuss about simple harmonic motion with 1 degree of freedom. In case of harmonic motion, we consider that if we have a particle having mass m and it is the position of its rest, or we can say that it is the position of equilibrium, and the net force at equilibrium or rest position is equal to 0, and if we applied some force, then the particle shows some displacement, and after releasing the force the particle move towards the towards the mean position, and it will not stop at the mean position or at the equilibrium position. Due to inertia, it continue its motion to the extreme point B, and the force makes the particle to move to the point A, that is the extreme point A. If particle is covering equal distance in both sides, then this type of motion is known as simple harmonic motion. If OA distance is greater than OB distance, or OB distance is greater than OA, then we will set it harmonic motion. It means if left hand side and right hand side displacements are not equal, then this type of motion is known as harmonic motion, and if x1 is equal to x2, then this type of motion is known as simple harmonic motion. Hence, we can discuss simple harmonic motion as a periodic motion which repeats itself in a fixed interval of time. It is a to and fro motion, and the particle covers equal distances about the mean position. It may be backward or forward movement, it may be left or right movement. There are infinite number of directions for simple harmonic motion. Now we will discuss about the mathematical terms used in the simple harmonic motion. Here we are considering a special case where simple harmonic motion is discussed only with 1 degree of freedom. We very well know that if a motion of a particle or motion of any body is discussed in one coordinate, then that type of motion is said to be in 1 degree of freedom. Let us consider here the displacement is along x-axis. If the displacement is along x-axis, then this distance from O to A can be represented with the help of a mathematical harmonic function. It may be a sine function, it may be a cosine function. X can be represented x is equal to A cos of theta, or it can be represented as x is equal to A sin theta, where theta is the angular displacement, or we can say that theta can be written in the form of angular velocity and the time taken. Here cos theta and sin theta both are harmonic function, and this motion can be represented with the help of this equation. So this motion is known as harmonic motion, as it is represented by the harmonic function, cosine function or sine function. Here we can discuss about the directions, or the velocity direction, acceleration direction or force direction of our harmonic motion. Here we say that the particle displaces towards the right. It means the direction of the displacement is towards the right, and we also see that the particle is moving in this direction, and the particle starts from rest and moves to a particular velocity v, and if already the particle is in motion, then at extreme position the particle will be at the final velocity 0, and the initial velocity at the mean point is maximum. It depends what condition are you discussing about.
Here the displacement is in the direction, right hand direction, so the displacement is in this direction. Similarly, the velocity depends upon the direction of the displacement. Therefore, the direction of the velocity is also towards the right. But as we are finding that the initial velocity at mean position is greater than the final velocity, because the final velocity at the extreme position is equal to 0. It means the particle is accelerating in this direction and the particle is deaccelerating in this direction. So the direction of acceleration of the particle is in the opposite direction of the velocity. Hence, the applied force is in the direction of acceleration according to the Newton's second law of motion, that is F is equal to ma. Therefore, the direction of the force is towards the left. These are the four physical quantities: displacement, velocity, acceleration and force, and we had discussed about the directions of all these quantities. Here now we will discuss about the energy of the particle, and the particle is moving as well as changing its position. Hence the particle have both energies, that is kinetic energy and potential energy. If you are not changing the boundaries, that is x1 and x2 are limited, or x1 and x2 are defined, it means they are not changing, they are constant, then the total energy, that is the sum of kinetic energy and potential energy, also remains unchanged, it remains constant. We very well know that the kinetic energy formula is equal to half of mv square, and in case of our particle, the potential energy is given by half of kx square, where k is representing your force constant and x is representing the displacement. The displacement is given in case of simple harmonic motion with harmonic functions, that is sine functions or cosine functions. Here we are representing x is equal to a sine omega t. Displacement which changes with time gives us velocity. Therefore, the velocity is the differentiation of sine omega t, where a is a constant, omega is also we are considering to make our calculation easy, we are taking its constant. Sin ओमेगा t का जो डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम cos ओमेगा t हो जाएगा, एंड ओमेगा इज़ कांस्टेंट, सो ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा. तो आपके पास v की वैल्यू आ चुकी है. काइनेटिक एनर्जी के केस में आपको v की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड्स वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t. और जब हम ये वैल्यू x की और v की हमारे एनर्जी के फॉर्मूले में एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, एंड वी विल हैव E इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वेयर, वेयर v स्क्वेयर इज ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर cos स्क्वेयर ओमेगा t प्लस हाफ ऑफ k x स्क्वेयर, वेयर x स्क्वेयर इज a स्क्वेयर sin स्क्वेयर omega t. We can take out omega square a square constant if we put the value of k in the terms of omega and m. And here the angular frequency is given in the terms of, that is mass, and the force constant omega is equal to, that is under root m upon k, where it is under root k by m, that is your force constant divided by inertial constant, that is mass. Omega square comes out to be k by m, and from this expression we can use the value of k in the terms of, that is omega square and m.
then k is equal to omega square m. Putting these values in the above expression, we will have E is equal to half of m, that is velocity square v square omega square a square cos square omega t plus half of kx square, where k we are changing it in the form of omega square m, into a square sin square omega t. From this whole expression you are getting that this whole term, that is half of m omega square a square, half of m omega square a square is constant, and we can take it as a common, and in the bracket you will get cos square omega t and sin square omega t, where sin square theta plus cos square theta is equal to 1. If angles are equal, angles are omega t and omega t, then you will have total energy is half of m omega square a square, and this is the total energy of simple harmonic motion if the boundary conditions are not changing. The kinetic energy is given by half of m omega v square, and this is your omega square a square cos square omega t, and the potential energy here is given by half of m omega square a square sin square omega t. If the motion starts from the mean value, it means omega t, or we can say that this is theta. Here theta is equal to 0 at the mean position, it means no motion is start, no angular displacement is there. Then what will happens to the kinetic energy and potential energy? We can find out the value of these from the above equation. Putting omega t or theta is equal to 0, it means we will getting the kinetic energy half of m omega square a square, that is the maximum kinetic energy. And when the kinetic energy is maximum at the mean position or at the angular displacement is equal to 0, putting here theta is equal to 0, you will have the potential energy 0. It means when potential energy is 0, the total energy is the kinetic energy. When the particle is at right hand extreme position, that is A, it means the angle theta is of 90 degree, and kinetic energy becomes 0 as cos 90 degree is equal to 0, and here the potential energy become maximum, that is omega square a square. And similarly, when the particles move from A to O, the angle become 180 degree, again the kinetic energy becomes maximum, potential energy becomes 0. You are finding out that when kinetic energy is maximum, potential energy is 0, when kinetic energy is 0, potential energy is maximum, and the average energy is half of m omega square a square. In simple harmonic motion, total kinetic energy is converted into total potential energy, and the law of conservation of energy is also valid in this motion. This is the mathematical discussion about the total energy of the particle, and total energy is consisting of the kinetic energy and potential energy, and they are changing into each other and obeying the law of conservation of energy. If we draw a graph, then between energy and time, or energy or angle, and let us consider this is the maximum energy, and the maximum energy is half of m omega square a square. At mean position or t is equal to 0, we find out that the potential energy is 0, and at extreme position, that is at 90 degree, we find out that potential energy
is maximum, and if the particle move from A to 0, A to mean position, again the potential energy is 0, and the particle move from O to B, and B is the extreme position, again the particle is at highest point, the potential energy becomes maximum. And after that the particle move from B to O and complete one oscillation, particles potential energy becomes 0. It means we will obtain a graph for a full oscillation or a time period t. We will have this type of potential energy graph. And if we discuss potential energy and kinetic energy together, when the potential energy is 0, at that time the kinetic energy is maximum. When the potential energy is maximum, at that point the kinetic energy is 0. At this point the potential energy is minimum, kinetic energy is maximum. Similarly, at this point potential energy is maximum, kinetic energy is 0. At this point potential energy is 0, means the kinetic energy is maximum. Hence we will obtain a graph of kinetic energy like this. And if we find out the average of kinetic energy and potential energy, we will have a constant line which is representing the total energy, and this is half of m omega square a square. This is the discussion about the kinetic energy, potential energy, total energy of the particle. Now we will discuss about the one dimensional motion, 1 degree of freedom, simple harmonic motion. And the simplest case for the simple harmonic motion here is the mass spring system. Let us consider we have a spring and it is attached with a fixed point at one end and the another end having a mass m, and this is the mean position without any application of external or displacement force. Let us consider here F is equal to 0. If we apply certain amount of force in the right hand direction, the spring expands, and let us consider the displacement or the expansion is x, and the force is applied on the mass m. And if we release this force, we will find out that the particle will show the compression with the same displacement as it shows the expansion. This force is elastic force. As we remove this force, the particle starts to gain its original dimensions, but due to the property of inertia, when no external force is applied, if the particle is moving with a constant velocity, it will move with a constant velocity and it will comes at the position B. And let us consider this is the position A. This force always tries to move the particle towards the rest position or equilibrium position, so this force is known as the restoring force, because every time the particle moves towards the mean position because of this force. Now this restoring force will change the value of x. As we increase the value of x force, the displacement will increase, but we will have the direction between displacement and restoring force opposite, because displacement is towards the right and the restoring force tries to move the particles towards the rest position. The negative symbol indicates the particle is moving away from the mean position, but the force tries to bring the particle towards the mean position. अगर आप
यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को आप यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं. तो लेट अस कंसीडर दिस इज योर first equation of motion, first equation, and according to the Newton's second law of motion, F is equal to ma, and we know that a can be represented in the form of displacement, that is the second order differentiation with respect to time of displacement. Now putting equation number 1 and equation number 2 equal, you will have m into d square x upon dt square is equal to minus kx. यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन आपकी आई है यहाँ पर दोनों तरफ वेरिएबल सिर्फ एक ही है. इसका मतलब एक ही आपके पास कोऑर्डिनेट है जिसके ऊपर आपकी इक्वेशन डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको हम 1 डिग्री फ्रीडम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं. m को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो कुछ इस तरह की रह जाएगी, दैट इज़ m d स्क्वेयर x अपॉन dt स्क्वेयर is equal to minus k by m x, and on comparing it with our harmonic function we will find out the angular frequency. कैसे पता लगाएंगे आप? आपके पास वैल्यू थी x is equal to sin omega t. आप यहाँ से एक्सेलरेशन का पता लगा लीजिए. फर्स्ट डिफरेंशिएट it with respect to time and you will get a omega cos omega t. On second differentiation you will get the acceleration t square x dt square, और आपके पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वेयर, और आप कोस का अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी. ओमेगा को ऑलरेडी हम कांस्टेंट ले चुके हैं. अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वेयर नेगेटिव को छोड़कर जो बचा है ए साइन ओमेगा टी, और कुछ नहीं है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. आप इसको एक्स की फॉर्म में पुट कर सकते हैं. अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है उसको आप के और एम की फॉर्म में रख सकते हैं. देन ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू के बाय एम, और ओमेगा कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट के बाय एम. इस इक्वेशन की हेल्प से ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है वन डायमेंशनल मोशन, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम की, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने एंगुलर वेलोसिटी का पता लगा लिया है. तो यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप टाइम पीरियड का भी पता लगा सकते हैं. ओमेगा को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम पीरियड टेकन बाय द बॉडी. 2 पाई दैट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. पूरा एक चक्कर लगाने के लिए बॉडी को 360 डिग्री का एंगल कवर करना पड़ेगा, और जब बॉडी 360 डिग्री का एंगल कवर करती है तो टोटल टाइम पीरियड जो लगता है उसको आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर आप 2 पाई अपॉन टी इज़ इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम कह सकते हैं, और यहाँ टी की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का पता कैसे लगाएंगे? फ्रीक्वेंसी इज़ द इन्वर्स ऑफ द टाइम पीरियड, और यहाँ पर आप अगर इसको पलट देंगे 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, तो ये देखिए कंप्लीट मोशन का आपने पता लगा लिया है. बॉडी जो है एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितने टाइम में करेगी और 1 सेकंड में बॉडी कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेती है, ये आपके पास आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है. तो सिंपल आप अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन से पूरी बॉडी की मोशन डिस्कस कर जाते हैं. 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और एक वाइब्रेशन और एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम पीरियड लिया जा रहा है. अगर आपका स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल ना होकर अगर वर्टिकल मोशन दे रहा है तो देखिए यहाँ पर भी हम इसको निकाल सकते हैं. लेट अस कंसीडर द अनदर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल हार्मोनिक मोशन केस. मान लीजिए
कि ये आपका स्प्रिंग है और अब तक आपने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई मास नहीं लगाया है। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग के ऊपर मास जो है हैंग कर दिया है। आप जैसे इस मास को हैंग करेंगे तो ये जो मास है ये एक फोर्स की तरह ही काम करेगा और ये जो फोर्स लगेगी ये इसका वेट हो जाएगा। एंड लेट अस कंसीडर कि अब की बार ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो वाई हुई है। तो यहाँ पर जो फोर्स है इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे माइनस के वाई से। अब की बार जो आपका कोऑर्डिनेट रहेगा, जो चेंजिंग कोऑर्डिनेट रहेगा वो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम कैसे देंगे, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन कैन बी गिवन इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को फिर इक्वेट कर दीजिएगा एंड यू विल हैव डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम टाइम्स ऑफ वाई। और अगर हम यहाँ अपनी इक्वेशन हार्मोनिक फंक्शंस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपको वह पता है ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू फिर आपके पास के बाई एम ही आएगी और ओमेगा की वैल्यू अगेन ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू आपकी के बाई एम आएगी, ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, दैट इज़ योर अंडर रूट के बाई एम। तो आप जितने भी आपके पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हार्मोनिक मोशंस को रिप्रेजेंट करने वाले केसेस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये सबसे इजी केसेस हैं हार्मोनिक मोशन के। जितने भी कॉम्प्लेक्स वेव्स हैं वो सभी के सभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के सुपर इम्पोजिंग के साथ दे सकते हैं। इनको हम हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।